हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था एंड दैट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज टेक्स प्लेस इन एंथर and that because of that microsporogenesis process this anther able to produce pollen grains. Okay, and this whole process we have discussed in the previous video. In this video what we are going to start, we are going to start with the female part because that was a male part in the previous video where we have discussed the endoecium, stamen and in anther cross section and microsporogenesis. Everything we have discussed in the previous video. Okay, in this video we are going to talk about the female part, and along with this female part we are going to talk about the megasporogenesis process. This is the process through which that ovule have that germ cell, egg cell. So how that egg cell is developed in that ovule, we are going to talk about this video. Okay, that process is called megasporogenesis, which takes place in a female part. So gynosium is a female part of it is a female reproductive part of the flower. Okay, and gynosium is made up of it is made up of number of carpels. It is made up of number of carpels. Let's talk about the parts of the carpel. There are how many parts? There are 3 parts in the carpel. First part is stigma, second part is style, third part is ovary. Okay, and all together we are calling it carpel. ठीक है, तीनों को एक साथ क्या बोल रहे हैं? कार्पल बोल रहे हैं. And when you will see the structure of ovary, so here you can see in the ovary you can see the ovule. One more structure is there, small structure you can see, green color structure, that is ovule. Okay, so here right now I am going to zoom that ovule structure and we will discuss the ovule part. Now here I will write structure of ovule, or what else we can call it? We can call it megasporogenesis. What that structure ovule is called? Megasporogenesis. Okay, now how this megasporogenesis look like and what are the parts? Let's discuss that. Okay, here you can see the parts of ovule. I will label all the parts here. Listen. Here the group of cells are there, tissue is there, like that. Right now the part of the ovule which I am making here, this ovule which we are talking about, ये जो ovule मैंने बनाया है ये immature ovule है. ये कौन सा ovule है? ये immature ovule है. ठीक है, और हमने मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में यही पढ़ना है कि ये जो immature ovule है ना, ये कैसे मैच्योर होता है. राइट नाउ यू कैन नॉट सी द एग सेल इन दिस, and when it will mature this whole process, and after that process you will see at the end of the process you will see that egg cell in this, but right now because it is immature you cannot see egg cell. So that process we are going to talk about, how egg cell is there, how it is produced and what is the process. Okay, let's talk about that now. Okay, before discussing that megasporogenesis we should know the parts of this ovule or a megasporogenesis. Okay, listen, this part, the last part of the ovule, this is the part which help this ovule to connect with the ovary. ठीक है, ये ovary के साथ यहाँ पे कनेक्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, that is called placenta. What it is called? It is called placenta. Next to the placenta, this part is called funicle. This part is called funicle, and next to the funicle one more part is there of ovule. That part is called hilum. What that part is called? Hilum. So here how many things we need to know? There are 3 things. One is placenta. What is placenta? Placenta is a structure which connects this ovule with the ovary wall. ये ovule को ovary wall के साथ connect करने में help करता है placenta. And funicle, it is a structure which is found between the hilum and the placenta.
And what is hilum? Hilum is a structure of the ovule which is found next to the funicle. Okay, and this is how you need to write. Or also you can write that it connects the whole ovule with the funicle. You can write in hilum also. Okay, here you can see two things. ये दो चीजें देख रहे हो आप, है ना, कवर जैसे. वी आर कॉलिंग देम इंटेग्यूमेंट्स. क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग देम इंटेग्यूमेंट्स. ठीक है. और यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेग्यूमेंट्स नहीं है. दिस इज द पोर्शन ऑफ द ओव्यूल विच डू नॉट कंटेन इंटेग्यूमेंट्स. देख सकते हो आप. इस वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. दैट पार्ट वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट. So here you can see placenta is there, funicle is there, hilum is there. Okay, three parts of ovule. Then micropyle and integuments आप देख सकते हो यहाँ पे. Integuments यहाँ पे covering है. This is inner integument. This one is outer integuments. ठीक है, ये integuments है covering of ovule. And जहाँ पे integuments नहीं है उस वाले part को आप क्या बोलते हो? Micropyle बोलते हो. ठीक है. एंड अपोजिट टू द, ये इस तरफ माइक्रोपाइल है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को बोलते हैं चलाजा. दिस पार्ट इज कॉल्ड चलाजा. ओके, और ये स्ट्रक्चर है. और यहाँ एक चीज और, यहाँ पे जो आपको सेल्स दिख रही है, दीज सेल्स आर न्यूसेलस सेल. इन सेल्स को क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस सेल्स बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये न्यूसेलस सेल्स की प्लॉइडी क्या होती है? Ploidy of nucleus cells is 2n. 2n मतलब they have a double chromosome, like in humans 46 chromosome. In the case of 46 chromosome, we are calling it diploid, and in the case of like in humans, in a sperm or the ovum contain half of the chromosome. That means 23 chromosome they will contain, and in that case 23 chromosome we are calling it haploid condition. Diploid means double and haploid means single number of chromosome. Okay, so here right now the double number of chromosome, they have nucleus cells. Now this is the structure of ovule. ठीक है, मान लो अगर इसके बारे में लिखना है तो तुम क्या लिखोगे? Placenta is a structure which connect ovule to the ovary wall. Funicle is a structure which is found between the placenta and the hilum. What is hilum? Hilum is a structure which connects funicle to the whole ovule. Okay, and then integuments, these are the covering parts, and there are two types of integuments. One is inner, another is outer integuments. What is micropyle? Part of ovule which do not have integument, that part is called micropyle and or micropyle. And opposite to the micropyle, one more part is there, that is called chalaza. Okay, this is how you need to write this about this whole ovule structure. And one more point you can write in this, that nucleus cells are found at the center. These are the cells and their ploidy is 2n, because one of the cell in the nucleus is giving to it will give rise to the embryo sac at the end. We will discuss that. Okay, let's talk about the megasporogenesis. Okay, the name of the process is megasporogenesis. Okay, listen now. In megasporogenesis process, what is going on? Suppose here this is the ovule. This is the ovule. Okay, and in this ovule there are many nucleus cells. Now this ovule here you can see it is immature. Right now it is immature because it contains nucleus cells. Right now it does not contain egg right now. Okay, so that is why it is immature. And the process which we are going to talk about here, that process of that is called megasporogenesis. And because of this process, this immature ovule will become mature. Okay, how it is going on? When this immature ovule, this end, listen, this part is called micropyle end, this part is called chalazal end. Okay, here you can see ये micropyle वाला part है तो इसको micropyle end M लिखा है मैंने, और ये वाला chalazal end यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? C. And this is how things will work here. Okay, listen, now it is going to mature. So what will happen कि micropyle end पे एक one of the nucleus cell, इतने सारे nucleus cell ना, तो
तो इस वाले एंड पे वन ऑफ द सेल क्या होगी, एनलार्ज हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको साइज में बड़ी बना देते हैं। देखो यहाँ पे वो जो सेल थी वो वन ऑफ द न्यूक्लियस सेल साइज में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। इस सेल को क्या बोलते हैं, दिस सेल इज कॉल्ड MMC. It also have diploid, ploidy. What is the full form of MMC? That is called megaspore. That is called megaspore mother cell. That is called megaspore mother cell. ठीक है, MMC. ठीक है। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस एक मेगास्पोर मदर सेल का पूरा प्रोसेस यहाँ बताऊंगा, और वो जो प्रोसेस मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, आपको अज्यूम करना है कि वो प्रोसेस यहाँ हो रहा है, आपको इमेजिन करना है कि यहाँ हो रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट द मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर, ये जो प्रोसेस मैं यहाँ बताऊंगा यहाँ होगा, ठीक है, आपको इमेजिन ऐसे करना है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल में होगा क्या, सबसे पहले फर्स्ट वन टाइप ऑफ डिवीजन इट विल टेक, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस होगा, और मियोसिस होने पे होगा क्या कि कितनी सेल्स बन जाएंगी, देयर आर 4 सेल्स। कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी। मियोसिस, एट द एंड ऑफ द मियोसिस देयर आर 2 टाइप ऑफ मियोसिस ना, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। So at the end of the meiosis first, we will get the 2 cells, and at the end of the meiosis second, we will get the 4th. So I'm going to write, or I'm going to draw these 4 cells together here. You can see directly. I will write here. Okay, I'm going to draw here. You can see the 4 cells. This one, अब ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ रख दो। ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ आ गया, यहाँ, इसमें डिवीजन हुआ ना meiosis, तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। तो ये वाला कौन सा एंड हुआ, दिस वन इज चलाजल एंड, दिस वन इज माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। ये वाला प्रोसेस अब होगा क्या कि चलाजल एंड, ये चलाजल एंड है ना, तो चलाजल एंड की तरफ की 3 सेल्स क्या हो जाएगी, वहां हो जाएगी डी जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी। डी जनरेट मतलब गायब हो जाएगी, ठीक है, वो स्प्रेड हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगी यहाँ से, मतलब एक सेल रहेगी यहाँ पे, ये वाली सेल रहेगी, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते क्या है, देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स हैं इसमें बहुत सारे, ठीक है, कितने हैं, 4 है, तो मेगास्पोर्स बोल सकते हो। अब इन 4 मेगास्पोर में से 3 जो यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं, ये 3 जो दिख रहे हैं, ये चलाजल एंड की तरफ वाले 3, ये तीनों सेल्स मेगास्पोर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। व्हाट विल रिमेनिंग, ओनली वन विल सर्वाइव देयर, एंड दिस सिंगल थिंग आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, दैट इज नाउ व्हाट इट कॉल्स, वी आर कॉलिंग इट मेगास्पोर। ये क्या है, मेगास्पोर है, ठीक है, क्या है ये, मेगास्पोर, ठीक है। सुनो अब आगे चलते हैं, मेगास्पोर में होगा क्या, सुनना, अब होगा कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि एक बार डिवीजन होगा, उसको बोलेंगे माइटोसिस, और माइटोसिस होने पे होगा क्या कि यहाँ पे आपको पता है माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 या एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द माइटोसिस। लिसन, जब मियोसिस की बात करते हैं ना, तो मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल से 4 सेल बनती है, ठीक है, एट द एंड, बट माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल ही बनती है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस से बनते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है, माइटोसिस में एक न्यूक्लियस था, इसमें अभी कितने हो गए, 2। नाउ अगेन वन मोर टाइम, again mitosis will take place, one more time mitosis will take place, there are 3 times mitosis will take place, this is the second time जब mitosis होगा तो ये साइज में भी enlarge हो जाएगा, और from 2 how many we will get 4, कितनी, 4 cells, 4 nucleus मिलने वाला है, ठीक है। again this structure will have one more time mitosis, again एक बार और क्या हो जाएगा, mitosis हो जाएगा। जब एक बार और mitosis होगा ना, इसका शेप काफी बड़ा हो जाएगा, and now it contains from 4, if they have mitosis, that means from 4 how many we will get the 8 nucleus, and this whole process is called karyokinesis. This process is called karyokinesis, where the division of karyokinesis means division of nucleus takes place. So you can see here, you can see nucleus is dividing, and as nucleus is dividing there, the size of that cell megaspore is increasing, okay. Now what next,
Karyokinesis. After the karyokinesis, one more process is going on, that is called cytokinesis. Karyokinesis के बाद कौन सा प्रोसेस होता है? साइटोकाइनेसिस होता है. क्या होता है? साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो देखो बात करते हैं. ये वो सेल है. अब यहाँ से ये एट न्यूक्लियस है ना, तो ये 8 न्यूक्लियस में से 1 2 3 ये तीनों ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 ये तीनों नीचे आ जाएंगे. पीछे कितने बचेंगे? 2. 3 और 3 चले गए, पीछे 2 बचेंगे, वो 2 बीच में सेंटर में रहेंगे. लेट्स मार्क इट. ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक ही साइटोप्लाज्म में 8 न्यूक्लियस थे. आपको ये ध्यान रखना है. 8 these 8 nucleus is present in a similar type of cytoplasm. They are sharing the cytoplasm, common cytoplasm they was having that time. They were having. Right now what we are going to do, we are going to separate them because cytokinesis is there. So here this one cell, this is second cell, and this one is third cell. These 3 nucleus is moving up. Now these remaining these 3 nucleus is moving down. So here one bigger cell will be formed, and the either side of the bigger cell smaller cells are formed. So here you can see how many nucleus? 6 nucleus. So we have settled. Now how many remaining from 8? 2. So 2 will remain here only. And what this structure is called, now it is not called megaspore. Now it is called embryo sac. What it is called? Embryo sac. And or what else we can call? We can call this embryo sac as a female gametophyte. What we are calling? Female gametophyte. This is called female gametophyte. ठीक है, अब क्या होगा? अब ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ रख दो. ठीक है, तो उससे होगा क्या? ये मैच्योर बन जाएगा. ठीक है, मैच्योर ओव्यूल बन जाएगा. अब ये इमेच्योर नहीं है. अब क्या हो गया? ये मैच्योर हो गया है. ठीक है, बनाते हैं. देखो तीनों चीजें बनाते हैं. ये एक हो गया, ये 2, ये ऐसे, और ये सेल्स को बोलते क्या, मैं बताता हूँ आपको, है ना. देखो, लिसन. ये now this ovule is matured. Now it is mature. Okay, but यहाँ पे सेल्स को मार्क करते हैं. क्या है वो सेल्स? उनका नाम क्या है? ठीक है, देखो इनको मार्क करते हैं. ये तीनों सेल्स जो ऊपर वाली सिमिलर साइज में दिख रही है, वी आर कॉलिंग देम एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स. एंड देयर प्लॉइडी इज एन. उनकी प्लॉइडी क्या होती है? एन. ठीक है, यहाँ पे जो बीच में सेंटर में बड़ी वाली सेल दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एग सेल. That is called egg or egg cell. Okay, and either side of the egg cell here 2 things are there. इन दोनों को एक साथ, दोनों सेल्स एक जैसी हैं. ठीक है, these cells are called synergid cells. ठीक है, और इनकी प्लॉइडी भी क्या होती है? एन. एग सेल की प्लॉइडी भी क्या होती है? एन. एंड इन द मिडल यू कैन सी these 2 न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है, और इनको क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट पोलर न्यूक्लियाई. क्या बोल रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं. ठीक है, और इनकी प्लॉइडी क्या? प्लॉइडी इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो प्लॉइडी है 2n. 2n क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज वन न्यूक्लियस, these all nucleus was having one type of ploidy. They all were having n means haploid they were there that time. So here how many nucleus are there? There are 2 nuclei. So n plus n will make the 2n. That is why polar nuclei is having what type of ploidy? They have 2n ploidy. And this whole process is called Megasporogenesis process. Here we have completed what was going on. At one time this ovule was immature, and जब ये ovule इस पूरे process से go through हुआ, तो immature से क्या बन गया? Mature ovule बन गया, and that whole process is called Megasporogenesis. ऐसे ये टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मेल गैमेटोफाइट, मतलब पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे, पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे. अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको. ओके, थैंक यू.